Hello friends, today we are going to learn about exercise 5.1. This example is very much useful for annual examination as well as first and second examination. The following distribution shows demand of 500 ml pouches of pasteurized turned milk by 59 customers. Find Carl Pearson's coefficient of skewness from this table. So in this example, demand of milk product and number of consumers is given, and here we have to find Carl Pearson's coefficient of skewness. So demand and number of consumers. So I am taking demand as an observation xi. So demand as a xi and number of consumers as a fi. Number of consumers as a fi. Demand is given 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and number of consumers 2, 7, 10, 15, 12, 7, 4, 2. So n is equal to 59. So in Carl Pearson's skewness, we have to find x bar, standard deviation, and also mode. So here, first di, that is xi minus a. In xi you can assume anything value. आप कोई भी value assume कर सकते हो. I am taking 4 as a. तो जो भी ऑब्जर्वेशन है xi उसके अंदर से आपको 4 माइनस करना है. So a is equal to 4. आप एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर से भी ला सकते हो, लेकिन मैं एफ आई डी आई से ले रहा हूँ. एग्जाम में आप पर डिपेंड है, आप एफ आई एक्स आई से मीन फाइंड करोगे या एफ आई डी आई से, दोनों में चलेगा, दोनों का सेम आंसर आएगा. 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3, 8 minus 4 that is 4. Now FIDA 2 into minus 3 minus 6, 7 into minus 2 minus 14, 10 into minus 1 minus 10, 15 into 0 0, 12 into 1 12, 7 2 ja 14, 4 3 ja 12, 2 4 ja 8. So sigma FIDA is required plus 46 minus 30, that is 16. Now FI DI square. FI DI square means FI DI इंटू डी आई. तो एफ आई डी आई है, उसको डी आई से आपको मल्टीप्लाई करना है. -3 इंटू -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 18, 2 इंटू 14 28, -1 इंटू 10 10, 0 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 14 into 2 28, 12 into 3 36,
4 8 जा 32. So FIDI square, that is 164. So FIDI square 164. For first we find mean. Mean means x bar. X bar is equal to A plus sigma FIDI upon N. A for assumed mean, we take 4 as a. Sigma FIDI is 16, N is equal to 59. 16 divided by 59, that is 0.27, and 4 plus 0.27, that is 4.27, and here demand is given in unit, or you can say product. Now we have to find mode NO. Mode means ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी में कौन सी मैक्सिमम है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 15, उसके सामने ऑब्जर्वेशन है 4, तो मोड हो जाएगा 4. MO मीन्स ऑब्जर्वेशंस हैविंग maximum frequency. So here maximum frequency है 15 और observation है 4. MO is equal to 4. Now we find standard deviation, that is S. So S is equal to under root sigma FIDI square upon N minus sigma FIDI upon N whole square into C कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 में C 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, सेम ही आंसर रहने वाला है. So FIDI square 164, value of N 59, sigma FIDI 16 upon 59 whole square. 164 divided by 59, that is 2.78. Now 16 upon 59, that is 0.27 whole square. So 2.78, 0.27 square, that is 0.0729. 2.78 minus 0.0729, that is 2.71. Now root of 2.7071, that is 1.65 यूनिट, या पाउच लिख सकते हो यूनिट. Now we have to find Carl Pearson's coefficient of skewness. Carl Pearson's coefficient of skewness J is equal to x bar minus NO upon S. So formula J is equal to x bar minus MO upon S. So x bar की वैल्यू है 4.27, MO mode, that is 4.
and S, that is 1.65. So 4.27 minus 4 upon 1.65, that is 0.60. Again, I repeat this example. In this example, demand of milk is given in unit, or you can say pouches. Milk pouch के अंदर मिलता है. And number of consumer as a frequency. In this example, we have to find Carl Pearson's coefficient of skewness. And for Carl Pearson coefficient of skewness, three measures we have to find. First, mean is required, mode is required, and standard deviation is required. For mean, we have two chances, FIXI or FIDI. I am taking FIDI, लेकिन अगर आप एग्जाम में FIXI से करोगे तो भी सही हो जाएगा. So in DI column, DI is equal to XI minus A अपॉन C हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 की वैल्यू 1 ही है, तो आप 1 को डिवाइड कर दो, सेम ही आने वाला है. आई एम टेकिंग एज्यूम्ड मीन एज अ 4, मैंने 4 को एज्यूम किया. 1 minus 4 minus 3, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 4 0, 5 minus 4 हो जाएगा. Now Fi into Di, FIDI, 2 into minus 3 minus 6, 7 into minus 2 minus 14, 10 into minus 1 minus 10. So FIDI हो जाएगा 16. Now FIDI square, that is FIDI into Di, minus 6 into minus 3 minus 14 into minus 2 minus 10 into minus 1. So FIDI is 164. X bar is equal to A plus sigma FIDI upon N. A assumed to be 4, FIDI is 16, N 59. So X bar 4.27. NO is equal to observation having maximum frequency. Maximum frequency 15, so that is 4. Standard deviation is equal to under root sigma FIDI square upon N minus sigma FIDI upon N whole square. FIDI is 164, N is equal to 59, sigma FIDI is 16 divided by 59 whole square. So standard deviation 1.65 unit. Carl Pearson coefficient of skewness, J is equal to X bar minus N upon S. X bar 4.27, MO4, S 1.65. So final answer, that is 0.60. Example number 2. The following distribution shows purchase of T-shirt by 270 customers according to the shoulder length in inches. Find Carl Pearson's coefficient of skewness from this data and interpret it. Now in this example, shoulder length of shirt is given in centimeter and number of customers is given. We have to find Carl Pearson's coefficient of skewness. So look, shoulder length is given, so we take as a X sign. And number of customers, here XI 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 and 16. Number of customers 5, 20, 30, that is frequency.
520, 30, 47, 47, 47, 56, 56, after 30, 47, 56, 56, 37, 16 and 3. Now total, that is 270, n is equal to 270. Now here we have two options, FIXI, FIXI square. I am taking FIDI. DI is equal to XI minus A, और यहाँ पे 12, 12.5, 13, 13.5, तो 0.5 की लेंथ है, तो डिवाइडेड बाय C कर देते हैं. सो कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो. आई एम टेकिंग 14, उसके सामने रख दो 0. A इज इक्वल टू 14, तो 12 माइनस 14 और C फॉर क्लास लेंथ 12, 12.5, 13, 13.5 की लेंथ है 0.5. मैं दिखा देता हूँ आपको. XI है 12, A है 14 एंड C है 0.5. So minus 2 divided by 0.5, that is minus 4. 12.5 assumed to be 14 upon 0.5 minus 3. 13 minus 14 divided by 0.5 plus 1 plus 2 plus 3 प्लस, तो हो जाएगा DI. नाउ FIDI इज रिक्वायर्ड. फाइव इंटू माइनस 4 माइनस 20, 20 इंटू माइनस 3 माइनस 60, 30 इंटू माइनस 2 माइनस 60, 47 इंटू माइनस 1 माइनस 47, 56 इंटू 0 0, 56 into 1 56, 37 into 2 74, 16 into 3 48, and 3 4s are 12. Now total 190 and minus 187, that is 3. तो प्लस का टोटल 190 है, माइनस 187 तो 3. नाउ FIDI स्क्वायर मीन्स FIDI इंटू DI. तो जो FIDI है उसको DI से मल्टीप्लाई. FIDI into DI minus 20 into minus 4 80, minus 60 into 3 180, minus 60 into 2 120, 47 0, 56 into 1 56, 74 into 2 148, 48 into 3 144, 12 into 4 48, sigma FIDI square, total that is 823. तो टोटल हो जाएगा 823. अब प्रॉब्लम दैट इज मोड. Mode means observation having maximum frequency.
यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 56 है, 2 टाइम्स है। अगर एक ही बार होता तो मोड मिल जाता। सो व्हेनेवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीटेड 2 टाइम्स, सो एट दैट टाइम मोड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 56 दो बार है। सो इंस्टेड ऑफ मोड वी हैव टू फाइंड मीडियन। तो आप मोड यहाँ पर नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दो बार है। तो मोड की जगह आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, और जब भी मीडियन फाइंड करना है तो आपको CFI का कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो CFI इज रिक्वायर्ड 5 plus 20 25 plus 30 55 plus 47 that is 102 plus 56 158 plus 56 214 plus 37 251 plus 16 267 plus 3 270. So here first we find x bar. X bar is equal to a plus sigma FIDI upon n into c. A मतलब assumed mean. Here we assumed a, that is 14. Sigma FIDI 3 and 270, and C for class length 12, 12.5, 13, 13.5. The length has 0.5. So 3 into 0.5 divided by 270, that is 0.01. So x bar is equal to 14.01. Now median is required, m. So m is equal to n plus 1 by 2 observation, n की वैल्यू है 270 plus 1 upon 2. So 271 divided by 2, 135.5 observation. Now referring in column of CF, तो 135.5 कहाँ पर मिलेगा? 5 में पॉसिबल नहीं है, 25 में पॉसिबल नहीं, 55 में नहीं, 102 में नहीं, 158 में हो जाएगा। सो आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको S फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो S की फॉर्मूला डालेंगे। Now S is required, standard deviation. S is equal to under root sigma FIDI square upon n minus sigma FIDI upon n whole square into C. FIDI square, that is 823, and that is 270. Sigma FIDI, that is 3 upon 270 whole square. C means length 12, 12.5, 13 की length है 0.5. So 823 divided by 270, that is 3.5.
0481. 3 divided by 270, that is 0.01 whole square. Three point 0.01 square, 0.111 into 0.5. तो माइनस करोगे तो 3.048, उसका रूट 1.746 into 0.5. So final answer 0.87 सेंटीमीटर या इंचेस। आपकी जो हाइट है वो इंच के अंदर है, इंच। (0.87 inch). So as 0.87 inches. Now we have to find coefficient of skewness by Carl Pearson. So Carl Pearson's coefficient of skewness, J is equal to 3 x bar minus n upon s. So 3 x bar is equal to 14.01 minus 14, s 0.87. So 14 minus 01 minus 14, that is 0.01. Upon 0.87. So final answer, that is 0.03. So in this example, shoulder length of shirt is given in inches, number of customers is given, and we have to find Carl Pearson coefficient of skewness. So for mean is required. So first we take DI column. In XI we take assumed mean as a 14, and 12, 12.5, 13, 13.5. So C, that is 0.5. So 14, that is assumed mean 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Now Fi into DI, Fi DI, 5 into minus 4, minus 20, 20 into minus 3, minus 16. So Fi DI, that is 3. Now Fi DI square means Fi DI into DI, minus 20 into minus 4, 80. Minus 16 to minus 3, 180, 823. Now, in this example, mode is not possible because mode is observation having maximum frequency. यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 56 अगर एक बार होती तो पॉसिबल है कि मोड फाइंड कर सको, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 56 इज रिपीटेड 2 टाइम, तो मोड पॉसिबल नहीं है. So instead of mode we have to find median, and for median one more column is required, that is CF. So 5 plus 20 25 plus 30 55
plus 47 102 plus 56 158 plus 56 214 plus 37 251 plus 16 267 plus 3 270. X bar is equal to A plus sigma FIDA upon N into C. A for assumed mean 14, sigma FIDA 3, N 270, 3 into 0.5 1.5 upon 270, that is 0.01 plus 14, 14.01 inch. Median is equal to N plus 1 upon 2 observation, and 270 plus 1 divided by 2, so 135.5 observation. Now referring in column CF, तो 135.5 यहाँ पर मिल जाएगा 158, so that is 14, so M is equal to 14 inch. Standard deviation is equal to under root sigma FIDA square upon N minus sigma FIDA upon N whole square into C. FIDA square 823, N is equal to 270, FIDA 3 upon 270 whole square, 823 upon 270 3.0481, 0.01 square, so 3.048 उसका रूट निकाला, so 1.746 रूट निकालने के बाद into 0.5, so final answer 0.87 inch. Carl Pearson coefficient of skewness, that is J, is equal to 3, x bar minus m upon s 3, x bar 14.01, n is equal to 14, s is equal to 0.87, so answer that is 0.0.